सदस्य मान को मु अभिनंदन जनाऊँगी। आज आमर जो मुख्य वक्ता अच्छा यही वेबिनार विषय मुझे कही दिए। आज वर्तमान जो परिस्थिति यही परिस्थिति रे प्राय आमर जो मधुमेह रोग यहाँ गोटे वर्तमान गोटे बड़ भूमिका ग्रहण करछि, जो कि भारत आस्ते आस्ते बहुत गोटे वाइड स्प्रेड डायबिटिक कंट्री आड़की जाउछि। तो से डायबिटीज को अर्ली एज रे कंट्रोल रखा निहाती दरकार। तो आम सांगे से विषय आज आम निश्चय डॉक्टर भरत पाणिग्राही शुणा। मु डॉक्टर पाणिग्राही विषय टिके दुई पद खाली कहीदेवी। डॉक्टर पाणिग्राही होचंदी एमडी FICF CP and FSCP USA, से सीनियर कंसल्टेंट and medicine rheumatism specialist, former director of Capital Hospital and physician to Governor of Orissa. So now we will start the session. मु डॉक्टर भरत पाणिग्राही की रिक्वेस्ट करी से वक्तव्य आरंभ करंतु सर। बर्तमान स्क्रीन तो देखा गला मैडम। आई थिंक समस्त को देखा गला बोधे सब देखि पाले। देखा जाउची स्क्रीन देखा गला। हां हां क्लियरली देखि पाबे। ओके सो एम आई ऑडिबल आल्सो क्लियरली? सर एकदम बढ़िया। मु समस्त को सुना जाउची ठीक? हां सर। ओके ओके सो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून टू ऑल। समस्त को नमस्कार। आज आम डायबिटीज रोग विषय किसी जाने शुणा किसी जाना कहीं ना मु डायबिटीज कहीं जो मोर सांग राजकुमार राव मत कहले कि कहवाई ओके वी कैन टेक इट एज ए सीरीज ऑल्सो। तो मुझे भाविली प्रथम आम डायबिटीज आरंभ करवा। कहीं डायबिटीज आरंभ करवा कहीं डायबिटीज गोटे रोग जोटा कि आम मधुमेह कहू। सो इट्स ए क्रोनिक डिजीज एंड इट्स एन एपिडेमिक। आम जोटा गोटे पैंडेमिक बर्तमान जमी कोविड-19 पैंडेमिक बोले आम कोविड-19 पैंडेमिक आम गति करुचु। सो लाइक दैट बिकॉज दिस इज एन इन्फेक्शियस डिजीज बट व्हेन वी गो टू डायबिटीज इट्स ए नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अनलाइक दिस इन्फेक्शन जमी भाइरस टा जन पाख संगे संगे दे जाए बट डायबिटीज सेमती जन पाख जन दे जाए। सो इट्स कॉल्ड NCD दैट इज कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बट इट्स आल्सो एन पैंडेमिक बिकॉज एमती कौन सी राष्ट्र ना एमती कौन सी कंट्री ना सारा पृथ्वी जो डायबिटीज ना। नॉट ओनली दैट diabetes affects almost around 10% of the entire population of the world, and in India also we are not beyond that also. Amaro bhi around 80 million people are suffering from diabetes, almost 8 to 10%. So that's why we are concerned with this disease. So kahin ki diabetes कौन kahin ki हमें diabetes विषय जानवा दरकार। तो वर्तमान मु कहीं चूज कली एगेन वर्तमान चली डायबिटीज मंथ एंड डायबिटीज अवेयरनेस मंथ। कहीं ना ये जो मासटा दैट इज November 14th आमर जे इन्सुलिन बाहर करथिले डॉक्टर बैंटिंग एंड बेस्ट। सो डॉक्टर बैंटिंग कर जन्मदिन हूँ November 14। तेणु से दिनटा को समस्ते वर्ल्ड डायबिटीज डे हिसाब से पालन कर जाए थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो दैट्स व्हाई दिस मंथ इज टेकन एज ए डायबिटीज अवेयरनेस मंथ आल्सो। So you will be knowing something about diabetes. I will be talking about basics for you all, and आपन माने जहार जदी किछि ता ऊपर और जानियार इच्छा then we can again discuss. Next slide. Yeah. So what happens? Amaro मनुष्य शरीर this is a full of different cells. Cell माने जीवकोश। आमर
शरीरटा कम्प्लीटली जीवकोश रे तैयारी जीव आम जेकोसी जगह आम आखि कहतु कान कहतु नाक कहतु जीव कहतु स्किन कहतु ये सब आम जीवकोश तैयारी यू जस्ट इमेजिन वन बिल्डिंग द प्राइमरी यूनिट इज द ब्रिक सो आवर बॉडी इज आल्सो द प्राइमरी यूनिट इज सेल बा जीवकोश तेणु लक्ष लक्ष कोटि कोटि सेल रे आम बॉडीटा तैयारी जदि स्किन है तार स्पेशलाइजेशन इज स्किन से सेल धर तो जीव आम कहवा जीवर स्पेशलाइजेशन देयर आर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स जो माने कि जीवटा तैयारी करूछंती आखि कहवा देयर आर सम स्पेशलाइज्ड सेल्स तांकर काम होला आखि दृष्टि बा देखिबा so they are also specialized in that way so in this way the whole body is composed of crores and crores of cells so when we eat food gets broken down into a different things because amara basically whatever we eat basically we have got three components of food one is carbohydrate another is protein another is fat then beyond that there are all different small there are the micromolecules vitamins বিভিন্ন iron manganese chromium there are the small things but basically these are sort of I am calling micronutrients but the macronutrients when we call them these are basically carbohydrate fat and protein and we Indians our basic staple diet is rice or wheat so our main content of food is basically carbohydrate so when we take carbohydrate what happens that is being digested and the final molecule that is called sugar so sugar re parinat hala pore carbohydrate ta sugar re parinat hala pore or that is called glucose so glucose re parinat hala pore that is being absorbed to blood se glucose absorbed se blood ko jaye so what happens after it is digested and converted to sugar or glucose so this glucose that flows into our bloodstream from there the sugar is supposed to go to the cells where it gets turned into energy for the body and the sugar can't get into the cell without a key so this sugar from the blood that enters the cells and inside the cells because the cells need energy cells amar दिन राति आमर सबू जिते प्रकार ऑर्गन समस्त काम करछंती धरंतु आमर ब्रेन दिन राति काम करूची आपण सोइला बेले खाइला बेले पिंदला बेले बुल्ला बेले सब बेले काम करूची आपनकर हार्ट सब बेले काम करूची हर काम करूची फुसफुस सब बेले काम करूची किडनी सब बेले काम करूची so all this cell they need energy to work and from where they get the energy from these nutrients and sugar or glucose is the main nutrient from where they get energy okay that's why the sugar glucose is also important for us but from blood to cell so there is an entry point so to enter from blood to cell there is a key so that's a very long signaling long pathways but in short basics from to enter sugar from blood into cell there is a key that key is what is that key next slide yeah so insulin you must have heard insulin the name insulin so think of insulin as the key insulin is made in long thin organ called pancreas and insulin unlocks the cells and let the sugar in so this way the sugar can leave the bloodstream without insulin the sugar is locked out it just stays in bloodstream so friends what happens whenever you think of insulin what happens this insulin just acts as a key so it when it unlocks the lock the blood sugar will enter into the cell without this insulin the blood cannot enter the cell that is the whole action of insulin for sugar so that's why if somebody doesn't have insulin if somebody is deficient in insulin what happens this sugar will accumulate in blood that is what we call as a blood sugar or blood sugar body gala blood sugar etike gala so that is why we call diabetes okay so that is called madhumeh or hyperglycemia or otherwise we call it diabetes next slide so this is a picture you can see you see this is inside the body inside the abdomen हम पेट भितरे एमिति गोटे माने जंत्र अछि हम लिवर लिवर एंड ए जो ता तळे ए जो आपण ऑर्गन टा देखुछंती
This is called pancreas. And it is gallbladder বা পিত্তকোষ আপন जो कहउछन्ती, this is the পিত্তকোষ, gallstone colstone हुए so here the so here is the organ called pancreas, and inside the pancreas the insulin is secreted. This is a hormone. Insulin is a hormone. This hormone is being secreted by this organ called pancreas. Okay, next slide. So most people with type 2 diabetes, I'll talk of two types of diabetes. One is type 1 diabetes, one is type 2 diabetes. I will not talk about type 1 diabetes. So almost 95% of the diabetes population are type 2 diabetes, which is more common in that terms. That's why I will talk more of type 2 diabetes. So most people with type 2 diabetes make insulin. So type 1 diabetes is just गोटे लाइन रे म कहि परिबी. Type 1 diabetes रे पिला मन छोट पिला मन आरंभ हुए अल्प वयस रे हुए. सेतरे कोन तांकर ए जो पेंक्रियास रे जो इंसुलिन सिक्रेशन जम्मा हुएनी, तांकर जो सेल गुडाको कंप्लीटली डैमेज हिसादी, तन सेमानकर इंसुलिन मोटे न थाए. तनु सेमाने पिला दिनु इंसुलिन नियंती जीवन जाक बचितला पर्यंत. दैट इज टाइप 1 इंसुलिन. But in type 2 insulin what happens? Type 2 diabetes what happens? Type 2 diabetes later stage रे हुए, आउटी माने बड़ लोक मानकर हुए, एवं एठी इंसुलिन थाए किंतु इंसुलिन रो परिमाण बहुत कम. इंसुलिन परिमाण आस्ते आस्ते से कमी जाए. तेणु सेठी हमरो देखा जाउची जे जेहेतु इंसुलिन परिमाण करे जे हमरो से जो इंसुलिन जेति काम करिया होता सेति से काम करि पारेनी. तेणु they may not make enough of it. They may not make it at the right times. Their body may not use insulin well. So तीन प्रकार हुए. आमे खाइले सुगर बढ़ला संगे संगे हमर नॉर्मली कोन हो इंसुलिन मत बड़ी चलियो. तो इंसुलिन बड़ी चलले हमर सुगर टा से गोटे लेवल रखो ताटो बढ़िया को दबो नाही. बट डायबिटीज से कोन हो एक तो सुगर कम हुए, इंसुलिन कम आसे, तापर पुनी जेतले दरकार सेतले होइनी. आमे खाउतवा गोटे सुगर बढ़तो सेनु तार इंसुलिन सिक्रेशन होतो. Sugar body सारला बेड़ को ये insulin secretion आरंभ करिवो. So there are lot of defects in the insulin secretion, and that also the body may not use insulin. एबो से जो unlocking लॉकिंग सिस्टम जोड अछि सेटे जेमिति यूज आता सेति मते यूज हिसे ठीक भाबरे यूज ही पारेनी. So whatever the case, the sugar just stays in the blood. So तारो जे आउटकम हैला sugar blood stream रे जमा हैला से सेल भीतर को जाई पारेला नाही. That's why the key doesn't hook up. This can lead several problems. That's why this sugar accumulates inside the bloodstream, and we call it as diabetes. Next slide. So how to diagnose diabetes? It's a तीनटा जिनस आपण मन मन रखु. डायबिटीज केते बेले कहू जेते बेले फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज आमे सकाळू खाइ माने खाली पेट रे मिनिमम 8 रु 12 घंटा ओवर फास्टिंग एतो निश्चय. तेणु धन जने राति 4टा रु खाउची ताको आमे सकाळू फास्टिंग कर परिबानी. सो मिनिमम 8-10 घंटा रु न खाइ कि जे सकाळे ब्लड शुगर परीक्षा करबा. इट इज फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज. इट्स नॉट होल ब्लड, इट्स ए प्लाज्मा. प्लाज्मा इज कंपोनेंट ऑफ सब ना सुनिथि आपनकर वर्तमान कन्वल्यूशन प्लाज्मा दे जाउची कोविड-19 रे. सो प्लाज्मा इट्स ए कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा माने ब्लड. सो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन और इक्वल टू 126 मिलीग्राम जदि थिबो. 2 और पोस्ट ग्लूकोज 2 घंटा ग्लूकोज चैलेंज देखि सकाळे खाली पेट रे 75 ग्राम ग्लूकोज 200 मिलीलीटर पानी रे पीबे. तार 2 घंटा पर रक्त नेबे. तार अमाउंट जदि 200 बा बेसी हबो बा HbA1c. व्हाट इज HbA1c? आई विल कम इट फॉर इट लेटर ऑन. HbA1c जदि मोर देन 6.5 हबो ताहाले. सो ए जो तीनटा जिंस जदि आइदर ऑफ all three if that is there, then we call the person is suffering from diabetes. Diabetes mellitus. It's called diabetes mellitus or diabetes, type 2 diabetes. Next, the diagnosis is same whether type 1 or type 2 diabetes, both, but we call it a type 2 diabetes. So sugar accumulate kala blood रे बहुत परिमाण रे. Okay, हला so why are we worried? हमें काहे के worried? ए sugar बेसी हला त हला हमें worried काहे कहबा? कोन problem? So सुगर रे आपण नंबर 1 ला आपण केमिति जानिबे सेटा करू आउट स्लाइड रे कहबी. अगर ना कह दोची टाइप 2 डायबिटीज रे सुगर बहुत समय रे एक्सीडेंटल जना पड़े बा आपण इंटेंशनली परीक्षा कर जना पड़े. एमती कि नियाती बहुत कम लोकंकर किछि साइन सिम्पटम्स थाए
किंतु ऑर्डिनरली साइन सिम्पटम जଣା पड़े नहीं साइन सिम्पटम जोटा को आपण कहउछन्ती परिश्रा बेसी हबो भोक बेसी हबो माने शरीर दुर्बल हो जिवो मन सुखी जिवो ए जो परिमाण रो ये गुडा को पलेरिया पॉलिटिसिया जो कहा जाउची भोक बेसी बेसी हबो ए गुडा को साधारण बहुत कम लोगों को देखा जाए टाइप 2 डायबिटीज रे किंतु टाइप 1 डायबिटीज रे इट इज ए डोमिनेंट प्रॉब्लम टाइप 2 डायबिटीज रे गुडा को साधारण मोटे देखा जाए नहीं लोगों आमे जदि परीक्षा करिबा इंटेंशनली और एक्सीडेंटली ताहाले एगुडा को जଣା पड़े सो ताहाले जदि ताकू जदि हम डायग्नोसिस न करिबा काहे कि हमें व्हाट इज द प्रॉब्लम कोन पाए हमें बेसी कंसर्न रे डायबिटीज ऊपर when your blood sugar is too high for too long it can slowly take its toll for of your body so gradually कोन हबो ये शरीर रो विभिन्न अंग को नष्ट कर दबो so one by one I'll come the vital organs 3 or 4 5 now it's coming to eyes when blood sugar is out of control for a long time the blood vessels to the eye may become damaged and you hear this called retinopathy this can cause major vision loss or even blindness getting a regular eye examination is a must for many people that is every year it is the best way to stop problem before they start if you start to have trouble with your eyes call your eye doctor right away there are still a lot you can do stop things from getting worse so friends what happens jahar e jo diabetes apna once diagnosed college yes this man has a diabetes so you must be very much cautious for your eyes okay so every year you must get tested for diabetic retinopathy kahi ke na jonakara jodi drushti shakti kami gala tahale it is a worst problem if you cannot see then what is the meaning of living so it is one of the vital organs of the body so we have to be very much cautious so we call it is a retina gote part hochi diabetes ro joti ki esari akhiro ଆପଣଙ୍କର front ରୁ ପଛକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ retina ଅଛି retina ରେ ହିଁ ଆମର जो light पड़े आखिरे से जाई retina रे ताकू माने कन्वर्ट हुए जे हां ए ऑब्जेक्ट रो ए जिनिस एवं ता से सेंसेशन जाए ब्रेन को so it is the vital part of the eye that is called retina and that gets damaged in diabetes next then comes your kidneys we are born with 2 kidneys so just a second so we are having 2 kidneys as all of you know so their job is to clean the blood and make the urine so whatever amara blood jo ame janchati jhada parisra re amara सब वर्ज्य बह्य वस्तु बा वर्ज्य वस्तु हमर देह जाए so it urine बा ए जो वर्ज्य वस्तु सब parisra re jiba that is one of the main actions of kidney so over time what happens urine carries waste out of the body so over time too much of sugar in the blood can hurt the kidney vessels inside the kidney and if this happens the kidneys can't clean the blood as well as they should so waste can start to build up in your blood rather than leaving your body as part of the urine so high blood sugar and high blood pressure can eventually shut down your kidneys completely okay so ब्लड सुगर बढ़िबा ब्लड प्रेशर बढ़िबा द्वारा ए जो किडनी गुडा नष्ट हो जाए सो आखि परे किडनी भी नष्ट करती तेणु प्रति वर्ष आमे जहार डायबिटीज अच्छी किडनी पई परीक्षा करबा जोडा कि ब्लड यूरिया पा जाउची यूरिया क्रिएटिनिन एवं यूरिन ए तीनटा परीक्षा आमे निहाती प्रति वर्ष करबा उचित और जहार किछि प्रॉब्लम होला से आउरी शीघ्र प्रति 6 मास रे प्रति 3 मास रे परीक्षा करबा उचित सो एटा हला गोटे another vital organ next then comes nerves so your nerves let you know when something feels hot cold pain हमें जानि परछे हमर स्नायुवन द्वारा एटा जदी गरम लागुची कि ठंडा लागुची कि कष्ट कोठे चिमुटी देले हम जाको कष्ट होउची सो एगुडा जिंस हमर जानि भी हमर स्नायु दरकार स्नायु काम so what happens in diabetes has affected your nerves and they are not doing their job well you might not feel something like a cut on your foot you don't care of a cut it can get infected sadly
a really bad infection can lead to losing the foot or limb. So when diabetes affects your nerves, it may also cause pain, burning, or tingling feeling in places like your hands and feet. So ଏଗୁଡାକରେ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଆଗ ସବୁ ଗୁଡାକ tingling burning sensation ହବ pain ହବ ତେଣୁ gradually କ'ଣ ହବ ହୁଏ ଯେ ନର୍ଭ ଗୁଡା ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯାଏ ତେଣୁ ଜଣେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର ଗୋଡରେ ଜାଣିପାରିନି ସେନ୍ସେସନ ଜାଣିପାରିବନି ତେଣୁ ଚାଲୁଥିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ଲାଗୁଥିବ ସେମିତି କିଛି କାଲୁଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିବ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କାଲୁଆ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କଟିଗଲା ସିଏ ଜାଣିପାରିବନି ଗୋଟେ ଗରମରେ ମାଡ଼ିଦେଲା ଜାଣିପାରିବନି ପୋଟ ଖାଇଯିବ ଜାଣିପାରିବନି ତେଣୁ ସେଗୁଡା ସବୁ ଅଲସର ହେଇଯିବ and diabetes is one of the major causes for amputation जो गोड़ कटा जाए माने लोकंकर so it is one of the main causes for amputation diabetes so this is also one of the major complications of diabetes next then comes heart so the coronary arteries which are the blood vessels that carry blood into your heart can also get damaged if one or more of these vessels gets blocked blood can stop flowing through this can cause a heart attack the heart attack can lead to heart failure or even death so heart the next organ to be affected is also the heart so heart kon hue heart sabu again कहले मु जे सबु जत्ते हमर जो सुगर रो डिस्ट्रीब्यूशन हुए थ्रू ब्लड तने ब्लड वेसल्स हमर सारा बॉडी रे अछि माने हार्ट हला गोटे पंपिंग लाइक ए पंप हार्ट रो कोन हुए सब रक्त नली सारा शरीर को जाय थाए स्टार्टिंग फ्रॉम फुट टू ब्रेन प्रति शरीर को ब्लड जाता है ये हला गोटे कंडुइट जस्ट लाइक आपनकर ये जेमती आपनकर पानी दोचंती गोटे पानी रे दवा पे आपनकर सब पाइप्स अछि सो एमती सेमितिया हार्ट रो मत सब पाइप्स अछि दीज आर ऑल कॉल्ड ब्लड वेसल्स या द्वारा रक्त संचालन सब आड़े जाए एवं ए रक्त रे ए सब जिंस आपनकर कोन हुए ट्रांसमिट हुए दैट इज द सुगर ए जो ग्लूकोज पसिला ये ग्लूकोज ट्रांसमिट है थ्रू ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बुझले तेणु समस्ते काम हार्ट आप सब पंप करुच्ची हार्ट मध्य काम करने तार भी एनर्जी दरकार एवं ताको एनर्जी सप्लाई करुच्ची कौन ये जो आपन कहगला जे कोरोनरी आर्टरीज ये जो कोरोनरी आर्टरीज कहगला कोरोनरी आर्टरीज ये माने हार्ट रो आर्टरी गुड़ा कह जाउची कोरोनरी आर्टरीज ता थ्रू रे हमर ये जो सब विभिन्न माने सुगर है बा अन्य जिनस जाए हार्ट को गले सी हार्ट रे हार्ट सेल्स गुड़ा सब एनर्जी करेंगे और हार्ट को काम कर साहाय्य करेंगे सो दीज कोरोनरी आर्टरीज व्हाट हैपेंस दीज आर दे गेट ब्लॉक्ड इन डायबिटीज मोर ओके कहना हमर ये जो सुगर बढ़िया द्वारा से आस्ते 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 से गोटे प्रोसेस अच्छी एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस ता द्वारा एरा सब ब्लॉक हो जाए तो ये जते ब्लॉक हो गला आपण जदि गोटे आपण कोरोनरी विभिन्न अच्छी ये अच्छी सो ताहे जदि कोडा गोटे ब्लॉक हो गला सेठू आम कहले कौन है से जो एरियाटा को रक्त संचालन कम बंद हो सांगे सांगे से एरियाटा से इस्चिमिया बा कर मरीज तो सेटा कहले आप जो हार्ट अटैक कहते हार्ट अटैक हुए एवं हार्ट अटैक जब हार्ट अटैक है दैट कैन लीड टू हार्ट फेलियर आल्सो कहीं आस्ते आस्ते से सब हार्ट रो पंपिंग एक्शन कमी एंड दैट लीड्स टू हार्ट फेलियर एंड इवन डेथ सो यही जो जिनस दैट कैन आल्सो अकन इन डायबिटीज नॉट दैट खाली डायबिटीज रोच अन्य रोग रोच किंतु डायबिटीज लोकंकर बहुत होची नेक्स्ट then comes the brain so the brain unfortunately diabetes can also block blood vessels to the brain so जेमिति हार्ट को कोरोनरी आर्टरीज गुडा ब्लॉक हो गले हार्ट अटैक होची किंतु ब्रेन को जो सर्कुलेशन जाउची ब्रेन रो ब्लड वेसल जदी ब्लॉक हो गला ताको कहा वाला स्ट्रोक ओके सो सेटा मत स्ट्रोक हेले कोन होय आपण जेमिति हेम्पली जाउची पैरालिसिस हो जाउची जननगर जा ठीक अछन हठात पैरालिसिस हो जाउची so that also happens in case of diabetes more and more so there is a lot we can do to prevent the chances of this and all the rest of the problems from happening and having diabetes is frustrating but there are simple things we can and must do to stay healthy so friends these are the problems that's why we are worried about diabetes okay next so what should we do
So day to day कौन जाने दरकार high blood sugar is hyperglycemia. So usually people can tell how high their blood sugar is based on how they feel. That's why they need to measure it. So you know the drill with this. You stick your finger, get a drop blood, and machine tells you how much sugar is there. So diabetes थरे हेले आपण जानिया दरकार आपण सुगर केते अछि. Okay, तो सेथि पे आपनकर machine अछि that is called glucometer. So every diabetic should have a glucometer. Not that you will run to the laboratory off and on. You should have the glucometer yourself, and you should see what is my blood sugar. And you should know mate kon karya uchit. So for most people, the range should be between 80 and 130 when they wake up in the morning. Some people may need to check 1 or 2 hours after a meal. Blood sugar then should probably be less than 180. Ask your doctor exactly when you should check and what to go start. So friends, what should you know? At least you should know जे बारंबार रक्त ब्लड ग्लूको जो ग्लूकोमीटर रे हम परीक्षा करिके हमरो व्हाट इज आवर एम व्हाट इज आवर टारगेट हैला मु फास्टिंग रे ब्लड सुगर शुड बी 80 to 130 80 ରୁ 130 भितरे मिलीग्राम भितरे ब्लड सुगर आया कथा इन फास्टिंग स्टेट एवं खाइबार 2 घंटा परे इट्स जो हम ब्लड सुगर देखिबा इट शुड बी बिलो 180 इट शुड बी लेस देन 180 एतिक जति हमें रखि पारले हमें जानले जे हमें यस हमारो ब्लड सुगर को हमें ठीक भाव में कंट्रोल करी पारुछे. नेक्स्ट keep it track of your levels. Your meter might keep track of these readings, and some people write them down. Recording them is important to so you can see how your levels change with diet, medication, and other things. How often when you check depends on diabetes medication you take and other things. You and your doctor can figure out. So ये जो जिनस गुड़ाक आप गोटे रेकर्ड सब रखा उचित जो डाक्तर पाखु जाऊँगी डाक्तर को देखेबे मोर या जिनस अच्छी मोर एमती एमती अच्छी तो डाक्तर आपको एडवाइस करेंगे हाँ नहीं आप ठीक अच्छी कि ना आप ये जिनसा ये करूँ कि आटा टे धरतु बढ़ातु ये टे कमातु सो आपन भी जापर जे हाँ मोर जिनसा के अंश बट आम टार्गेट है या ओके. नेक्स्ट आमे एबे सब जानिले कोन हला हाइपरग्लाइसेमिया बा हाई ब्लड सुगर आपण सुनिथिबे डायबिटीज लोकंकर मध्ये लो ब्लड सुगर हे जाय संगे बेले बेले काहे ना आपण जो माने इंसुलिन नउचंती जो माने औषध बटिया खाउचंती गोटे प्रकार बटिया खाउचंती ता द्वारा हाइपोग्लाइसेमिया हबार समान मध्ये बहुत हाइपोग्लाइसेमिया मध्ये इक्वली डेंजरस. हाइपोग्लाइसेमिया रे आपण ब्रेन सेल गुडा को नष्ट हो जाय काहे ना हमर ब्रेन सेल केवल ग्लूकोज रे बंचती. So unlike high blood sugar, most people can feel with their blood sugar low when they feel sweating, lightheadedness, shaky, headache. ये सब जिनस हम एवं जो डायबिटीज मान सब प्रोब्लेम है से इमिडिएटली आम जानवे जे मोर ब्लड सुगर कमीगला ग्लूकोमीटर रखिथे सांगे सांगे देखीदेवे और सांगे सांगे आपण तो ग्लूकोज नहीं जीवे कहीं ब्लड सुगर जदि बहुत समय कमिबो ताले हार्ट रो जो रिदम होची सेटा एरिदीमा बेसी हबो ब्रेन सेल गुडाक आस्ते आस्ते सब कौन हे ये ग्लूकोज न पाइक आस्ते आस्ते डिजेनेरेट हे तो डिमेंशिया फॉरगेटफुलनेस एगुड़ाक सब शीघ्र शीघ्र हम जदि बेसी आप हाइपोग्लाइसेमिया अटैक हम. नेक्स्ट सो दिस कैन हैपन सो केते ब्लड इशू हुए हाइपोग्लाइसेमिया जेतल धरतु आप डायबिटीज लोकंकर गोटे है सब ठीक समय खाइबे ठीक भाव में खाइबे तेणु ये सब जिन न मानवे ताले कौन हम don't eat if you don't eat enough, don't eat when you normally do, and are more active than usual, and drink alcohol on an empty stomach, accidental take too much of the medicine or too much of insulin. So ये सब जिनस जदि हम ताहले आपनकर ये जो हाइपोग्लाइसेमिया हवार संभावना सब बेसी. नेक्स्ट ट्रीटिंग सो कौन करेंगे जदि है ताहले something that gives you sugar fast can help. There are chewable glucose tablets and flavored gels you can keep in your purse pocket. So सबते डायबिटीज लोग समस्ते गोटे गोटे आपनकर ए जो ग्लूकोज टैबलेट्स सबले निश्चय कैरी करूथिबे पॉकेट रे आ निज साइड रे निज बैग रे रखिथिबे कहना केतेबेले काहा को हबो किछ जणा नै तो एडा हेले the only way is to immediately take 2 3 4 glucose tablets ताहले आपनकर ए ब्लड सुगर आपन रखा पाइबे. नेक्स्ट
Check your arms, legs and feet for cuts. ସବୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପାଦକୁ ଗୋଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ଦେଖିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯଦି ଯାହାର ଡାଇବେଟିକ୍ ନ୍ୟୁରୋପାଥି ଥିବ, ନର୍ଭ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଥିବ, ସେ ଧରନ୍ତୁ କୋଉଦିନ ଯାଉଥିବେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଖଣ୍ଡିଆଟି ହେଇଥିବ ସେ ଜାଣିପାରିବନି, ଏବଂ ସେ ଖଣ୍ଡିଆଟା ଯଦି ଥିବ, ଯଦି କୋଉଠି ଫୋଟକାଟେ ଥିବ ସେ ଜାଣିପାରିବନି, ଏବଂ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କ'ଣ ହବ, ଅଲସର ହେଇଯିବ। ସେ ଅଲସରରେ ଶୁଖିବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ, ଏବଂ ସେ ଯଦି ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟା ହେଇଯିବ, ପାଦରେ କଟା ହେଇଯିବ। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଡ଼କୁ ଭଲ ସଫା କରିବେ, ପାଦକୁ ଭଲ ସଫା କରିବେ, ଏବଂ ପାଦକୁ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା କି, ପାଦ ହାତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁବେଳେ ନିରୀକ୍ଷଣ ଭଲ କରି କରିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ, ୱେୟାର ସୁଜ୍। ଖାଲି ପାଦରେ କେବେ ଚାଲିବେନି ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋଜା ଜୋତା ପିନ୍ଧିକିରି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ଇଟ୍ ଇସ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ୱେୟାର ସୁଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଟ୍ ୱେଲ୍, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଯୋଉଟାକ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ବେଳେ ବେଳେ ଭଲ ଜୋତା ନ ପିନ୍ଧିଲେ ବେଣ୍ଡି ପଡ଼ିଯାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରନ୍ତୁ କୋଉଠି ପାଦ ତଳେ ହଉ ବା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ହଉ ଘଷି ହେଇ ବେଣ୍ଡି ପଡ଼ିଯାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀ ଖରାପ ଏଇ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ। ୱେଲ୍ ଫିଟିଂ ସୁଜ୍ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଦି ଫିଟ୍। ନେକ୍ସଟ, smoking. Smoking, as usual, it is important for diabetes and non-diabetes both, but smoking in diabetes is also more harmful. କାରଣ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମର ସବୁ ରକ୍ତ ନଳୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମୋକର୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ এই ସ୍ମୋକିଂ ଛାଡ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଏବଂ ଯଦି ସ୍ମୋକିଂ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଡିକ୍ସନ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡି ଆଡିକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିକୋଟିନ୍ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍, ନିକୋଟିନ୍ ପ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। So you can take the help of doctor, and you should know how to also de-addict yourself from smoking. So how to leave smoking, how to quit smoking, that is also important. Next, next, so throughout the year, even with a very good doctor, some people with diabetes don't get the care they need to stay healthy. Knowing what needs to be checked and where your number need to be is a good place to start. So you should know more kon sabu. Khali diabetes is not sugar, my friends. So diabetes is ABC of diabetes. ABC, A stands for A1C, B stands for blood pressure, C stands for cholesterol. So controlling a diabetes is control of A, B and C. Next, A1C. What is that A1C? समस्त जो डायबिटीज जानिथिबे डाक्टर लिखिबे योर अपना ब्लड A1C करिवे. So what is that A1C? A1C is a measurement of the glycohemoglobin, and it should get it checked after at least 2 times a year, but normally it should be done every 3 months. A1C आम जानिले आम थर तो आप आज ब्लड सुगर कले आप जानले से पॉइंट रे से मोमेंट रे आपनकर ब्लड सुगरटा केते अछि, किंतु A1C द्वारा आम कौन जाना पड़िबो जे गत 3 मासर गोटे से एवरेज देखेबो जे ड्यूरिंग लास्ट 3 months आपनकर ब्लड प्रेशर कंट्रोल कौन से हमको देखेबो. That is what our blood A1C. This A1C should be less than 7. Should be less than 7. ताहले हम जानिबा जे it is well controlled. Next, cholesterol. Cholesterol management is a part of diabetes management. So because cholesterol is our the prakar cholesterol see, what is the good cholesterol and is a bad cholesterol. The bad cholesterol is the LDL, what we call LDL, and good cholesterol is what called HDL. That is the low density lipoprotein, that is the high density lipoprotein. So this HDL amar बेसी रहा कथा and LDL टा amar कम रहा कथा. सो एटा को आमे सबले माइंड रे रखिया पड़िबो. तेणु आमर केते रहबो कोन रहबो सेटा आपनको आपनकर डाक्टर सबले कहबे. विभिन्न माने लोकन पई विभिन्न कंडीशन पे यार वैल्यू LDL रा वैल्यू सब अलग अलग, but LDL is a bad cholesterol and HDL is a good cholesterol that should be maintained. So we must maintain. Every diabetes should know how to what should
take, every diabetes should take at least one anti-cholesterol tablet. That is a must. Next. Then getting your kidneys checked. Yes, agur koichi. So once your doctor may check how your kidneys are doing. Diabetes can damage your kidneys, so it's important to keep an eye on how they are working. Because kidneys, there is practically, we do not have any satisfactory treatment for diabetic nephropathy. Diabetic nephropathy, body challe, it's also kete problem, kidney damage thare hele, we don't have kidney transplant, dialysis. These are all not satisfactory. ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଡନୀ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହବନି ସେ ହେଲ and dialysis କରି ବଞ୍ଚିବା କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ. So these are the things, but friends, we can prevent it. ଆମେ ଯଦି ମୂଳରୁ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଆମେ ତାକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା. Next, ତ ଏ ଡକ୍ଟର should look at your feet. ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଆମେ ଦେଖିବାନି, ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଗୋଡରୁ ଜୋତା କାଢି ଗୋଡରୁ ମଜା କାଢି ଗୋଡରୁ ଲୁଗା କାଢିକିରି ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଥରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ପ୍ରତିଥର ଯେ ହାଉ ଇଜ ଦ ଫିଟ୍ ଅଫ ଦି ପେସେଣ୍ଟ. ନେକ୍ସଟ, get your eyes checked regularly. ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଫଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ବା ରେଟିନା ଏକ୍ସାମିନେସନ କରାଇବେ. ସୋ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିହାତି କରାଇବା ଉଚିତ. That is the message I want to give to all of you. You may not have diabetes, somebody else in your family may be diabetes. So you can educate your family members also, because diabetes treatment is not the patient itself. The patient needs the cooperation of entire family. If somebody is having diabetes in the family, everybody should know what is hyperglycemia, what is hyperglycemia, what are the complications of diabetes, कौन करिया उचित, कौन न करिया उचित. The entire family should know about diabetes, so that you can take care of yourself or also any of the family members who have diabetes. Next, high blood pressure. Blood pressure management is also a part of, because almost 70%, 75% of the this diabetes people, they do have blood pressure. So blood pressure diabetes bhai ତେଣୁ diabetes and blood pressure ଏକାଠି ପ୍ରାୟ 75% ଲୋକଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଥାନ୍ତି. And blood pressure itself also damages the kidney, damages the heart, damages the eyes. So both of these are ମିଶିଗଲେ the damage is more and more. So blood pressure management is also a part of diabetes management. So blood pressure, high blood pressure, what is we call it hypertension. So you must see that the diabetes, the blood pressure must be less than 140/90. What we call, there are two types of blood pressure. One is systolic blood pressure, one is diastolic blood pressure. So systolic blood pressure should be less than 140 and diastolic blood pressure should be less than 90 millimeters of mercury. Next. So checking your own blood pressure. Now that ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମେଜରମେଣ୍ଟ. ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ହିୟର, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଇଛି there are 3 types of blood pressure measurement. ଗୋଟେ ହେଲା ଡାକ୍ତର ଯୋଉ ଦେଖିବେ ଅଫିସ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମେଜରମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ହୋମ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମେଜରମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଅଛି. ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମାନେ ବାନ୍ଧିକିରି ଆପଣଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ABPM. But that is not at all feasible. So the home blood pressure measurement is the best. So everybody should, not only diabetes, non-diabetes, everybody should have one blood pressure. That's the digital blood pressure. Nowadays, very good digital blood pressure are available, and egudaakar sabu both reading is very good. ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର. And you should measure the blood pressure. How to blood pressure କେମିତି କରିବେ? ଆପଣ look for one with a cup that goes for every hour. Be sure to sit and relax for 5 minutes or so before you check your blood pressure. That way you will get a more accurate reading. So ये ता automatic blood pressure measurement नबा आपको कुछ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ. But ଆପଣ ଠିକ ଭାବରେ ବସିବେ, ଠିକ ଭାବରେ ହାତକୁ ରଖିବେ, ହାତଟା ଠିକ ଆର୍ମଟା ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଲେଭେଲରେ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ରିଲାକ୍ସଲି ଆପଣ ବସି 5 ମିନିଟ୍ ତାପରେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବେ. And that is the best. That is better than going to the doctor and measuring the blood pressure. Okay, so home blood pressure measurement is the best, and you should always measure. It should be less than 140/90.
Next. Medications, I don't want to go in detail. There are medications, both prakara debe, and after there are one medicine metformin, what achi, jota ki samaste khaiba uchi, and that is the medicine. It's a very low cost medicine, and that everybody should take. Insulin, as all of you know. So when there are medicines are there, tablets there, when that doesn't work, then the doctor will give you insulin. So insulin କେତେବେଳେ ଦରକାର, but you should not ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି, ଯଦି insulin ଦରକାର ତାହେଲେ you should not hesitate to take insulin. Of course, insulin is an injectable. So that is the whole problem with insulin, because ସବୁଦିନେ ଗୋଟେ injection naba is definitely a problem. But if after it is necessary to keep us healthy, then we should not tell no. आजकल बहुत प्रकार इंसुलिन बाहर बहुत सुविधा इंसुलिन बाहर इंसुलिन पेन्स आर अवेलेबल एंड यू नो इंसुलिन पेन इज नॉट दैट ये सेमती एते पेनफुल भी नुह जस्ट बहुत छोट नेडल बहुत सुविधा बाहर सो इफ somebody definitely somebody requires it, if doctor advises no you should take insulin, we should not say no. Next. Next. या मुझे गोटे जिनस केवल कहबी स्टाटिन्स ए स्टाटिन गोटे टैबलेट जोटा कि मुझे कहबी सबू डायबिटीज पेशेंट माने ए स्टाटिन बटिका निश्चय खावा दरकार जदि बाय चांस रे आपण डाक्टर न देई नाहंती आपण भी इनक्वायरी करिवे जे am I taking a statin. So statin बटिका eta many people with diabetes should may take a statin drug which may help lower blood cholesterol and the risk of things like heart attack and stroke. So each statin tablet खाली cholesterol कमाएनी ये heart attack stroke ये सब मध्य कमाए. So every diabetes should take a statin. So जदि there are many doctors where they forget to take give a statin also. Only there are many people who concentrate on only sugar or pressure, but they don't give a statin either knowingly or unknowingly. They forget to give a statin. So, but I will advise you: every patient should be conscious enough that whether his prescription includes a statin, that you should also incur. Next. Vaccines. This is another important thing. Every diabetes patient should take these vaccines. One is a flu vaccine, that is influenza vaccine. Everyone should take influenza vaccine every year. Pneumococcal vaccine. So pneumonia vaccine once per lifetime. You should take all senior citizens. They should take pneumonia vaccine. Hepatitis B vaccine. If you are not vaccinated, then you should take also hepatitis B vaccine. So these are the vaccines, all not only diabetes must, but beyond diabetes also, every senior citizen should take all these three vaccines. Okay. Next. Eating well, food and exercise. So food and exercise is also a part of diabetes health management. You should know what is how to take, what to take. So it's because food is a thing which is not a beta concept masse dimas no, it's a lifelong affair. And with our variety of foods there, kahara ko choice, kahara ko race, ko religion. So if you in West Bengal some food is different than in Odisha. In if you go to the southern states, their food habit is also different. But basically, one should know that more khadya, more thali, at least I should take everything, little of everything. But a diabetes patient, he should avoid जोड़े जिनस जे सुगर डायरेक्ट सुगर से खाइबनी नंबर 1 एवं कार्बोहाइड्रेट आमर छाड़ी सब प्रकार खाद्य मु कार्बोहाइड्रेट भी खाइबी प्रोटीन भी खाइबी फैट भी खाइबी फलमूल खाइबी साग खाइबी पनीपरिया खाइबी सो सब जिनस मु टिके टिके खाइबी सो आमे जोटा को पिला दिने पाठ पढुले सुषम खाद्य सो दैट इज द थिंग व्हिच वी नीड द important is calorie, how much you take.
सब जिन खाइबी केते खाइबी मोर जदि वेट ठीक अच्छी ताहले मो सब जिन समान पानी मो भल भाव खाई मोर जदि वेट बेसी अच्छी इफ आई एम ओबीज मोर जदि वेट 75 80 केजी 90 केजी अच्छी सो आई शुड quantitatively I should reduce the total amount of food but in a distributed manner. That is the whole thing I want to tell. Not that dietitian पाखु जिबा dietitian कहबो एटा खाओ एथु 10 ग्राम खाओ सेथु 20 ग्राम खाओ सेथु 50 ग्राम खाओ. It's not possible. We are not the president of India. जे हमर जण थियो लोक थियो मापी करी आपन रोसे करी खाइबा दउथिबे. It's not possible. So हमर काम हला आमे जानिया दरकार जे मो मोर थाली रे देखिबी मो थाली रे सब जिनिस टिके 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 थिबो एवं क्वांटिटेटिवली मध्य टिके रिजनेबली ठीक थिबो मो जदि वेट मोर बेसी अछि आउट कमेबी मो कोन वेट मेंटेन करिबी सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू इट्स इन ए ब्रॉड सेंस एंड गोइंग टू डाइट these are all things these are I don't believe in that. Next, exercise. This is again another part of the story. So you must do exercise daily. Exercise, what I want to do, there are two types of exercise. One is aerobic exercise and one is resistant exercise. Aerobic exercise, so the senior citizens, we can do one thing, that is walking. Walking is a brisk walk. So you must walk at least 30 minutes a day, minimum 5 days a week. So that is a must for everybody. Whether diabetes or non-diabetes, everybody should work because that will keep you fit. Resistant exercise, you can do resistant exercise, stretching exercise, you can do some cycling, you can do some that thing dumbbell like things you can do. So you can do yogas. So these are also resistant exercise that also you can do. Okay, so these are the exercises that will make you fit and that will make also your sugar control. Next, losing weight. Yes, losing weight is also part of diabetes management. Weight management, again, it's a part of diabetes. You have to be very much careful about your weight. So your BMI, what we call it, that is BMI. So body mass index, BMI should be 23 or less. It should be around 23 or less. So 23 to 25, we call it a overweight. More than 25, we call it that is obese. Weight management is also part of diet management. You must see that your weight is within normal limits. Next. So friends, this is my last slide. So always remember your A1C, the diabetes should remember these four things. A1C must be less than 7. Blood pressure should be less than 140/90. And blood sugar should be in the fasting stage, it is 80 to 130. And after meals, it should be less than 180. So this is what every diabetes patient, not only diabetes or non-diabetes, everybody should know because they can also help their friends, their relatives, their family members. So this is the always remember. Okay, thank you. धन्यवाद सर ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡାଇବେଟିସ ର ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ କହିଲେ ମୋଷ୍ଟଲି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଆମର ଯେମିତି ଡାଇବେଟିସ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏପିଡେମିକ ଟାଇପର ହେଇଗଲାଣି ତ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଲାଟର ଷ୍ଟେଜରେ ବି ଡାଇବେଟିସ ବାହାରୁଛି ମୋର ପିଲା ଯୋଉ ନାହିଁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ମତେ ଲାଟର ଷ୍ଟେଜରେ ଡାଇବେଟିସ ହବନି ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ କମ ଏଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଡାଇବେଟିସ ଆଜିକାଲି ହବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆଉ ଦୁଇ ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଟିକେ ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡାମ ଟିକେ କହିବେ First question achi sir, if diabetes is controlled by taking medicine as known from sugar test, fasting and PP, is it necessary to replace medicine by insulin injection at some point of time? हाँ देखो गोटे जिनिस डेफिनेटली अपन तो जोटा कहली ओराल एंटी डायबिटिक ड्रग्स जोटा कहली या द्वारा
प्रथम आम सुगर कंट्रोल करा जाउची किंतु कौन है मु जो देखली गोटे पेंक्रियस जो थ्रू इन्सुलिन बाहर से पेंक्रियस रे गोटे थाए जीवकोष ता ना होची बीटा सेल्स से बीटा सेल रु इन्सुलिन बाहर आपणकर जेते बेले डायबिटीज डायग्नोसिस हला सेते बेले ये जो बीटा सेल ऑलमोस्ट 50 रु 75% नष्ट हो सारा ओके तेणु आउ जो 20-30% रहा कि 40% रहा से जी से माने इन्सुलिन बाहर कर नॉट सफिशिएंट से आमको डायबिटीज है एवं से बीटा सेल गुड़ाकर धर्म है से आस्ते आस्ते एमती नष्ट हो चलो बुझिपारे सेटा गोटे पार्ट ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज ये जदि 50% अच्छी सी आस्ते 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 एमती नष्ट हो चलो से जो बीटा सेल सो सी जी नष्ट हो आमर इन्सुलिन सिक्रेशन कमी कमी जाऊ आप औषध परिमाण बढ़ी बढ़ी चली सो देयर स्टेज कम्स जोटे कि डाक्तर कहे ना आपण ये स्टेज रे आमको इन्सुलिन सप्लीमेंट दरकार से आप हाँ करेंगे आपण कहबेनि ना या चलु था आउ किछि दिन चलु आहरी टिके औषध दियंतु आहरी खांतु देखिबा देखिबा सो देखि देखि बट फ्रेंड्स साधारणतः यस माने किछि लोक अछंती कहार केते शीघ्र नष्ट हबो सेटा केही कहबेरे कोन साइंटिस्ट अपन कहि पार ना एमेति अछंती जण जण सेही दीटा टैबलेट रे जीवन सारा चलीछि 20 वर्ष निछंती जण जण अछंती विदिन 5 इयर्स दे नीड इन्सुलिन सो दैट varies from person to person तेणु जिते बेले डाक्तर फील करेंगे yes now the blood sugar is not well controlled then definitely but if somebody is having blood sugar is well controlled there is no need of taking insulin it's not like that medicine बदला insulin खाया एमती गोटे न्याय दरकार नहीं if somebody is well controlled with tablets it's very good fine PP based another question I think what I see Satyajit Geo PP based test to be done after 1 to 2 hours after food. Is testing your by home kit is reliable? Yes, I told again. There are two things. Diabetes diagnosis करिवा एवं diabetes हमें monitoring करिवा. These are two things. For diagnosis of diabetes, this kit is definitely not helpful. डायबिटीज डायग्नोसिस सब बेले आमर रक्त नहीं लैबोरेटरी रे प्लाज्मा ग्लूकोज करें दरकार थोड़े डायग्नोसिस हो गला डायबिटीज बट फॉर मॉनिटरिंग पर्पस दिस ग्लूकोमीटर इज अगेन एनफ यू हैव टू डू द ग्लूकोमीटर फॉर मॉनिटरिंग तेणु ये मॉनिटरिंग द्वारा आप डायबिटीज मेंटेनेंस करें चिकित्सा करेंगे मेंटेन करें एंड मझे मझे आपन को देखा HbA1c देखा पड़ो आपन को माने डाक्टर पाखो देखि मझे मझे करें बट फॉर योर मॉनिटरिंग ऑलवेज हैव वन ग्लूकोमीटर विथ बहुत धन्यवाद सर बहुत बढ़िया सेशन है आउ कहार ये क्वेश्चन नहीं तबे आज मु एई अधिवेशन को वेबिनार को शेष करने पूर्व आमर मुख्य अतिथि मुख्य वक्ता डॉक्टर भरत पाणिग्राही को अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी संजोग ग्रुप तरफ आओ जो सभ्य माने संजोग सभ्य माने अन्य माने आसी जोग देइछंती आ शिक्षणीय जिनस गुड़िक ग्रहण करछंती समस्त मु धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची संजोग तरफ धन्यवाद सर हो धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद डॉक्टर भरत हाँ आज अति उच्च कोटि थिला माने साधारण जिन माने सीनियर सीनियर बहुत लोग डायबिटीज आक्रांत निश्चय थे जहाँ अधिकारी ये जना पड़ी आते सुंदर माने माने जो जिन साधारण जिन लोक जानी ना आम से जिनसा सुंदर भाव बुझेल रियली रियली धन्यवाद No, it's my privilege. So I'll be happy. Anything, if I can at least be useful, I'll be useful. अपना जितने जहाँ जाने दरकार कहला I can talk on anything, any medical science अपना जहाँ चाहिए I can talk on any part of medical science. There's nothing like that.
So when ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଚାହିଁବେ I can give you a talk. Sanjog is proud of you. Well. ହଉ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ ଯିବା। Oh, No, thank sir. you very much. धन्यवाद Bye. सर। हाँ।